Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in geography chapter agriculture. Need of technological and institutional reforms. It's important questions for your board examinations through this topic. Need of technological and institutional reforms. Institutional and technological reforms. Today we discuss about the technological or institutional reforms. Now, in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon. In spite the development sources of irrigation facility developed in our country, but most of the farmers in our country still depend on monsoon and natural fertility. In order to carry on their agriculture, it means that in spite of development of irrigation facility, most of the farmers depend on agriculture for monsoon, depend on monsoon. For a growing population, this poses a serious challenge. This is a very serious challenge for the farmers. Agriculture needs some kind of serious technical and institutional reforms. Now, in this video, we discuss about the institutional reforms. I have already provided some notes of this institutional reforms separately, but let us discuss one by one. Collectivization and consolidation of small land holding. Collectivization and consolidation of all small holding. Collectivization you study in class 9th. Collectivization was a policy of forced consolidation of individual peasant households into collective farms called kolkhoz, carried by the Soviet government in late 19th. You know that in class 9th we study about the kolkhoz. The collective farms are called kolkhoz. Now the collectivization programs launched by Soviet government in late 1920. Now the consolidation of all small holding. Now consolidation of land holding means to bring together different pieces of land and merge them into one land or one bigger land. Consolidation of land, it means bring together different pieces of lands and merge them into one land. This is called consolidation of land holding. Now, what's the reason for consolidations? There are few reasons for small land holdings. Division of inherited father's property among children. You know that's there is a small land holding. The reason for small land holding, why? Because of that division of inherited father's property among the children. Now, in the abolition of zamindari system after the independence, zamindari system abolished in our country, and popular zamindar system popular in our country. Zamindars were considered as a part of government. Zamindar is a part of government. They had control over the land and particular area where they used to do farm works, or they lend their land to the farmers and to the peasants. They used to collect taxes from them on behalf of the king. It means Zamindar is the part of government, and they collect tax from farmers, sent to the king. Why? Because representative of king on that particular area. Entire land
holding by zamindar. They also provide some kind of loan facility to farmers. Now, another things of collectivization and consolidation of all small holding discuss now. Abolition of zamindari system we discuss in 1948. We abolished zamindari system. We abolished all kind of titles, those are given by the British government. Now the third point, the various other land reforms like ceiling on land holding were introduced. Now land ceiling means what? Land ceiling refers to the quantum of land held by a family. It means land ceiling can be defined as the process of fixing the maximum limit of land holding that an individual can own. It means how many land owned by a single individual family. Land ceiling can be defined as the process of fixing the maximum limit of land holdings that an individual can own. It's a land ceiling on land holding. It's a land reform introduced in our country. These are the institutional reforms made by the government. Now the next provisions, provision of crop insurance against drought, flood or cyclone. Government provide crop insurance scheme against the drought, flood and cyclonic disturbance. Crop insurance introduced in the country with effect from Kharif crop. It means crop insurance started with Kharif crop in 1985. It means the provision of crop insurance started in our country from 1985 with Kharif crop. Now, another point, establishment of Grameen Bank and cooperative societies and banks for providing loan to farmers. Grameen Bank, Prathama Bank was the first Grameen Bank, and cooperative society formed, and NABARD formed for providing loan to farmers. Through this kind of loan facility, farmers purchase their seeds and also purchase agriculture tools for their agriculture purpose. NABARD is also providing loan facility to farmers. Now the another institutional reforms made by government, Kisan credit cards and personal accident insurance scheme were also introduced by the government. Kisan credit card scheme introduced in India 1998 and 1999 has since become a flagship program providing access to short-term credit in agriculture sector. Kisan credit schemes launched in India 1998-99. It's a flagship program for providing access of short-term credit in agricultural sectors. So now these are the institutional reforms important for your board examinations. आज हम नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम ये जान रहे हैं कि इंडिया में इरिगेशन की फैसिलिटी के डेवलपमेंट होने के बावजूद भी अभी बहुत सा बड़ा हिस्सा इंडिया का ऐसा है जहां पर लोग अब भी मानसून पर डिपेंड करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑफ देयर एग्रीकल्चर। नेचुरल फर्टिलिटी के लिए मानसून पर डिपेंड अब भी हैं। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। और बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करा पाएं। इसलिए जरूरी है एग्रीकल्चर नीड सम काइंड ऑफ टेक्निकल
एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, कुछ तकनीकी और आधारभूत रिफॉर्म्स की सुधार की जरूरत महसूस हुई। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कलेक्टिवाइजेशन program, you know that collectivization programs launched by Soviet Union through Stalin collectivization program, हमने क्लास 9th में स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम पढ़ा था। और पीजेंट के कलेक्टिव फॉर्म्स जहां जहां जो जिसे आप कुलकोस कहते थे बनाया गया। कंसोलिडेशन ऑफ इंडिविजुअल पीजेंट हाउस होल्ड। अब कंसोलिडेशन ऑफ ऑल स्मॉल होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का यह मतलब हुआ कि डिफरेंट पीस ऑफ लैंड को मर्ज कर दिया जाए वन लैंड में, जिसको आप चकबंदी कहते हैं कि भाई किसी का चक अगर छितरा हुआ है, अलग अलग है, तो उसे आप एक जगह कर देंगे तो एक बड़ा चक हो जाएगा। ये रिफॉर्म हुआ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई बहुत से रीजन थे। पहला तो पिता की जो प्रॉपर्टी थी वो बच्चों में बढ़ती, तो इससे बहुत छोटी पीस ऑफ लैंड होती, इस पर्पज से ये चीजें हुई। अब जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया इंडिया में। जमींदारी सिस्टम हम जान रहे हैं कि जमींदार गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा होता था और वो कंट्रोल करता था किसी पर्टिकुलर एरिया में लैंड को, और उससे वो अब काम कराता था लोगों से और लोगों को देता था जमीन काम करने के लिए, अनाज उगाने के लिए, पीजेंट्स को, और उससे जो टैक्स वो रिकवर करता था वो बिहाफ ऑफ किंग, वो उस टैक्स का इस्तेमाल राजा के बिहाफ पर करता था उसको। तो अब नाउ लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग में एक चीज और कि किसके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। भाई कुछ लोगों के पास बहुत सी जमीन हुई और कुछ लोगों के पास एकदम पीस ऑफ लैंड नहीं हुआ। तो जो लोग किसी की जमीन पर सालों से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि उनके फैमिली के लिए जितनी सफिशिएंट जमीन थी वो उनको दे दी, जो रेस्ट जमीनें थी वो उन लोगों में बांट दी जो उनकी जमीन पर सालों से काम कर रहे थे। यहाँ फैमिली की जो लैंड वो फिक्स किया गया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन, यानी एक इंडिविजुअल कितनी जमीन ले सकता है, इसको फिक्स किया गया गवर्नमेंट के थ्रू। अब प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, it's a very big institutional reforms made by government. क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है, फसल के नुकसान होने पर, अगर किसी तरीके की नेचुरल क्लाइमेटी की कंडीशन में कोई नुकसान होता है तो गवर्नमेंट जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लेकर आई 1985 में, जो कि खरीफ की क्रॉप से ही शुरुआत होती है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक जो है प्रथमा बैंक, फर्स्ट ग्रामीण बैंक था जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एस्टेब्लिश की गई। आपने आनंद कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना होगा, वर्गीस कुरियन जो कि मिल्क रिवॉल्यूशन के फाउंडर माने जाते हैं ये। और नाबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट भी लोन देने के लिए फार्मर्स को की गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक वो किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम्स वेयर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट स्कीम इंडिया में इंट्रोड्यूस की 1998-99 में, और ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था शॉर्ट टर्म क्रेडिट को एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोवाइड करने के लिए। किसान क्रेडिट जो स्कीम थी वो 1998-99 में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई। ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फैसिलिटी थी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो नाउ दीज आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।